Okay, in the previous video, I think we stopped uh, at fire load, correct? So now, uh, one second. Yes. So now you already know what is fire load. So now I'll continue with the same topic. Okay. So the amount of heat liberated in kilojoules per square meter. This is nothing but the unit of fire load. That is kilojoules per square meter. Okay. That is energy divided by area square meter. Okay. The fire load is determined by uh, multiplying the weight of all the combustible materials by their respective calorific values and dividing by the floor area under consideration. See, first of all, how you are going to find out the fire load is, you already know it is nothing but the heat energy released per square meter. So how you are going to get to know that how much heat energy is produced or released during the fire. Okay. So in that one, what you have to do is, first thing what you have to do is, you need to find out the weights of all the combustible materials. So that means with their that means, say you take one room, समझो there is a residential building, some and it catches fire. ठीक है. So if you take one hall, in that particular hall, yeah, there will be a sofa will be there, yeah, TV will be there, yeah, carpet will be there, curtains will be there, like this different materials will be there. So what you have to do is, weight of all the combustible materials by their respective calorific values you need to find out. So that means समझो if sofa caught fire, then the amount of energy released by the sofa is different, और sofa material के ऊपर depend रहता है कि कितना एनर्जी वो रिलीज़ करेगा, बिकॉज उसका अलग कोलोरिफिक वैल्यू रहता है. सिमिलरली कर्टन का अलग रह सकता है, या टीवी का अलग रह सकता है, फर्नीचर का अलग रह सकता है. सो मेनी थिंग्स, यू टेक एनी नंबर ऑफ मटेरियल्स विच आर प्रेजेंट इन द, या ऑब्जेक्ट्स विच आर प्रेजेंट इन द हॉल. ठीक है. सो व्हाट यू हैव टू डू इज, यू नीड टू take the weights of all the combustible materials by their respective calorific value लेके find out करना है. Then divided by the floor area, whatever the floor area of that particular drawing hall is there, yeah, hall is there. So then if you divide that calorific value or weight of all the combustible material divided by that floor area, you will get the fire load. ठीक है. So fire load is the used for the grading of occupancies, and as per BIS 1641/1960, the fire load is divided into the following classes. So low fire load, moderate fire load, and high fire load. These are the three different what we can say is different classes. Okay. Low fire load means obviously whatever the heat energy which is going to produce, it is very less. Moderate and high fire load. Okay. That means this classification is based on purely upon the fire load. Okay. So grading of occupancy by fire load. It may be noted that the different materials having same weight and the same calorific value may present different hazards. See, now it doesn't matter, like there is a two materials are there which is having same weight. समझो there is a material A 1 kg, material B 1 kg, but calorific value is material A is समझो some x value is there, and the calorific value of material B is some x y value is there. Both the calorific value are same and both the weights of the material are the same, but only thing is two different materials are there. But by saying these values, it should not get wrong idea नहीं मिलना चाहिए कि दोनों के वजह से, दोनों अगर अलग अलग फायर पकड़ा तो दोनों का इफेक्ट अलग रहेगा या सेम रहेगा, बिकॉज उसका दोनों मटेरियल का वेट सेम है और कैलोरीफिक वैल्यू भी सेम है, फिर भी द इफेक्ट में चेंज. ठीक है. आई होप यू गॉट दिस पॉइंट. ठीक है. सो देर इज मटेरियल ए विच इज हैविंग द सेम वेट एंड कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ समझो 2. द सिमिलरली there is a material B which is having the some weight 1 kg, but it is also having the calorific value of 2. दोनों का मटेरियल का वेट सेम है, कैलोरीफिक वैल्यू भी सेम है, बट आग लगने के बाद उन दोनों के वजह से जो इफेक्ट होने वाला है वो अलग हो सकता है. ठीक है. दिस इज मी. It depends on other properties such as speed of burning, liberation of dangerous fumes. So that means that effect depends upon so many other points such as कि कितना फास्ट या कितना स्पीड से वो फायर पकड़ेगा.
ठीक है, या बर्न होगा, या किस तरह का डेंजरस फ्यूम्स उस मटेरियल से बर्न होने के बाद बाहर निकलेंगे, या वो हजार्डस मटेरियल भी हो सकता है, तुरंत पकड़ के बहुत जल्दी ब्लास्ट हो सकता है। ठीक है, तो मतलब बहुत जल्दी आग पकड़ के ब्लास्ट होने का मटेरियल, बट एनर्जी सेम रिलीज कर रहा है, बट बहुत जल्दी ब्लास्ट हो रहा है। सो इफेक्ट्स may change. Clear? So for accessing the fire grading, the materials are classified as non-hazardous NH, hazardous H, extra hazardous EH by considering following properties. So that means there are few properties are there like explosive tendencies, high inflammability. Just मैं बात कर रहा था कि I was telling that how fast it is going to burn or blast हो सकता है. So that means depending upon whether it is very inflammable material, highly inflammable material, या spontaneous combustion, या explosive tendency हो सकता है. So depending upon these properties, the materials can be classified as non-hazardous, hazardous and extra hazardous material भी हो सकता है. ठीक है. So let's say if it is fire load, जैसे मैंने इधर पहले बात कर रहा था, I was talking about this fire load, all these things, correct है. So now in this fire load, moderate fire load and high fire load, so what is the meaning of that one means, see there is a one table is there which is provided here. Low fire load means whatever that energy it is going to produce, that is in kilojoules per meter square or square meter, it should not exceed 1.15 into 10 to the power of 6. Okay? And this is the fire load which you can be seen, or you have to be kept in the guidelines. Domestic buildings, hotels, restaurants, schools, hospitals, worship places, etc. These places are considered as low fire load. Okay? So moderate fire load, it is 1.15 into 10 to the power of 6 to 2.3 into 10 to the power of 6. So retail shop, markets, factories, these things comes under moderate fire load. That means समझो एक हॉस्पिटल आग लग गया, या घर डोमेस्टिक बिल्डिंग आग लग गया, तो दिस इज कंसिडर एज लो फायर लोड. दैट मीन्स ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करता है कंपेयर टू द अदर बिल्डिंग्स विच कम्स अंडर मॉडरेट एंड यूर हाई राइज बिल्डिंग, हाई फायर लोड बिल्डिंग्स का. सो इफ़ यू टेक गोडाउन्स, जहाँ पे बल्क स्टोरेज करते नॉन हजार्डस मटेरियल का या गुड्स का, तो ऐसे दीज थिंग्स कम्स अंडर हाई फायर लोड बिकॉज ऑफ द मटेरियल्स प्रेजेंट इन दैट वन. बिकॉज इट इज़ गोडाउन्स बोलते ही आपको समझ में आ जाएगा कि सो मैनी मटेरियल्स आर स्टॉक्ड इन साइड, लाइक स्टॉक किया रहता है, बहुत ही पास में रहता है, तो बहुत जल्दी आग लग सकता है, बहुत सारा मटेरियल रहेगा. सो बिकॉज ऑफ दैट मीन्स पर स्क्वायर मीटर में ज़्यादा मटेरियल्स रहेगा कंपेयर टू सम रेसिडेंशियल बिल्डिंग. ठीक है, तो इट मे कॉज मोर, इट मे जनरेट मोर एनर्जी. ठीक है, दैट्स व्हाई इट कम्स अंडर हाई फायर लोड. सो ठीक है, नेक्स्ट विल मूव ऑन टू फायर हजार्ड. सो दैट मीन्स exposure hazard, internal hazard and personal hazard. These are the three different types of fire hazards. See, exposure hazard means sometimes a fire spreads into building through open air from fire in adjacent building or across the road or other part of the building. समझो आपके घर के बाजू में या दूसरे बिल्डिंग में फायर लग गया था थ्रू एयर, या ऐसे हवा बह रहा था तो उसके वजह से आपके बिल्डिंग में थोड़ा आग लग गया, या जो भी प्रॉब्लम होता है, या ओपन एयर से आएगा, या एडजस्टेड बिल्डिंग अक्रॉस रोड में फायर लगा था, ऐसे कुछ है, तो दिस टाइप ऑफ हजार्ड्स आर कॉल्ड एज एक्सपोजर हजार्ड. ठीक है, रिस्क इन्वॉल्व इन सच फायर स्प्रेडिंग इज नोन एज एक्सपोजर हजार्ड ऑब्वियसली. सो सेकंड वन इज इंटरनल हजार्ड. दिस टाइप ऑफ हजार्ड कंसर्न डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग इटसेल्फ एंड इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द फायर लोड. सो दैट मीन्स इट इज अ टाइप ऑफ हजार्ड कंसर्न डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग इटसेल्फ. तो जो आपका बिल्डिंग है, या जो आपका हॉस्पिटल है, स्कूल है, जो भी है, दैट प्राइमरी उसी पे आग लग गया, तो इट इज़ कॉल्ड एज इंटरनल हजार्ड. सो इट इज़ वेरी क्लियर. द वर्ड इटसेल्फ इंडिकेट्स इंटरनल हजार्ड मीन्स अपने बिल्डिंग में लाइक इंटीरियर इंटरनली फायर कॉट हुआ है. एक्सटर्नल मीन्स बाहर से फायर आ रहा है. ठीक है, पर्सनल हजार्ड मीन्स द पॉसिबिलिटी ऑफ द लॉस और डैमेज ऑफ टू द लाइफ इज रेफर्ड टू एज अ पर्सनल हजार्ड. सो दैट मीन्स बिकॉज ऑफ द फायर एक्सीडेंट्स, if there is any possibility of loss of human beings or some damage to the property, this is called as personal hazard. ठीक है. So next one is the factors affecting the fire development. So that is growth and development, geometry and ventilation. The point is whenever the fire catches, okay, to some particular object or something, so
whether that particular incident is going to become a major incident, a major damage cause कर सकता है कि that depends upon so many things, like depends upon the material itself, depending upon whether it is a spontaneous और उसके ऊपर blast हो सकता है, ऐसा कुछ material है क्या, combustible material है क्या, flammable material है क्या, highly flammable material है क्या, तो ऐसे ऊपर डिपेंड भी हो सकता है. देन देर इज अनदर थिंग इज इट डिपेंड्स अपॉन द ज्योमेट्री एंड वेंटिलेशन ऑफ द बिल्डिंग इटसेल्फ. See, this is what we are going to discuss, or this is what we have to think as a civil engineers, because we are the planning engineers. So that means geometry of the building and ventilation, because it depends, even the fire may spread because of the proper ventilation. बहुत ही अच्छा हवा आ रहा है तो because of that one the fire can make spread fastly. ठीक है. So factors sufficient inflammable अगर है तो it will spread rigorously. Heat flux from first ignited atom is sufficient to irradiate adjacent material. See, what happens is, समझो there is one material which catches, समझो सोफ़ा को आग लग गया समझो, ठीक है, because of when it catches fire, it is surrounding में, उसके surrounding में heat energy produce होता है, that is called as heat flux. So अगर उसका heat flux जो उसका capacity सिर्फ उसका वो क्या बोलते हैं उसका heat इतना मारता रहता है, उसके वजह से भी अगर बाजू वाला मतलब फायर डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आया, बट बिकॉज ऑफ दैट हीट बाजू का मटेरियल अगर इफ़ इट कैचेस फायर, सो इवन दैट डिपेंड्स दैट हाउ मच हीट फ्लक्स, उसका एरिया कितना है, दैट ऑल्सो मैटर्स. सफिशिएंट फ्यूल एग्जिस्ट विद इन द इंक्लोजर, तो सेम बिल्डिंग के अंदर अगर उसी फ्लैट के अंदर अगर कितना सब फ्यूल एग्जिस्ट है, सब समझो स्टोरेज है, सम फ्यूल स्टोरेज करके रखा था, डिपेंड्स अपॉन दैट वन ऑल्सो, इट डिपेंड्स फैक्टर्स हो सकता है. देन रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, सो अगर समझो बहुत ही लाइक ऑक्सीजन बहुत ठीक ठाक नहीं है, मतलब वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है, तो फायर रिक्वायर्ड एयर, इफ़ इट डजेंट गेट दैट वन, सो इट विल, उसका स्पीड कम हो जाएगा. ठीक है. सो नेक्स्ट स्लाइड में आई एम गोइंग टू वन ग्राफ दैट इज पैटर्न ऑफ फायर. ठीक है. लेट्स सी व्हाट इज दैट वन. विल ट्राई टू अंडरस्टैंड. इट्स अ वेरी सिंपल ग्राफ. ठीक है. सो इन दिस वन यू कैन सी there is a x-axis which is one second, okay, x-axis and y-axis is there. x-axis is time, ठीक है, and y-axis is the temperature. ठीक है. so this is pattern of fire, मतलब fire एक ऑब्जेक्ट को अगर फायर पकड़ा तो how it behaves. Time is very important here, so that's why time versus the temperature, because fire, the temperature matters, it keeps on increasing and after some time it will reduce, and to increase and it will stay and it will reduce, it takes some time. So that's why this pattern of fire. So you can say this is the origin, समझो this particular point A. so जैसे वो आग लगता है तो the time starts. ठीक है. so when it's धीरे धीरे टाइम इंक्रीज होता रहेगा, समझो 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट, समझो 5 मिनट्स तक आया. ठीक है. जस्ट गिवन एग्जाम्पल ऑफ वन पर्टिकुलर मटेरियल, तो उसका टेम्परेचर धीरे 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 इंक्रीज होता जाएगा. ठीक है. सो व्हेन इट रीचेस 5 मिनट्स, सो समझो टेम्परेचर था 30 डिग्री 40 डिग्री 50 60 70 100 पे आ गया. आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल वंस अगेन. सो दिस इज़ द पीकेस्ट पॉइंट. दैट मीन्स द पर्टिकुलर मटेरियल अगर आग लग गया तो सो इट इज़ गोइंग टू बर्न एंड द टेम्परेचर विच इट इज़ गोइंग टू प्रोड्यूस इज 100 डिग्री. सो दिस इज़ द 100 डिग्री पे आ गया. देन आफ्टर दैट वन समझो दिस इज़ 5 मिनट्स, इतना याद रखो, दिस इज़ 5 मिनट्स हो गया और इधर 100 डिग्री हो गया. ठीक है. दिस इज़ 5 मिनट्स हो गया. सो आफ्टर दैट वन समझो अनदर 10 मिनट्स, दैट इज़ 5 हो गया था, 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसे आके 15 तक आया. सो 15 मिनट्स गया. सो 15 मिनट्स समझो दिस टेम्परेचर इट इज़ गोइंग टू रिमेन सेम कॉन्स्टेंट, दैट इज सेम 100 ही रहेगा. ठीक है. सो आफ्टर दैट वन अनदर 5 मिनट्स. I'm just giving once again example 16 17 18 19 20. तो 20 मिनट, नेक्स्ट 5 मिनट्स क्या होगा, धीरे 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 टेम्परेचर कम होता आएगा. ठीक है. सो दैट मीन्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल इज द हाउ द फायर वर्क्स इज हाउ फायर वर्क्स इज जैसे टाइम इंक्रीज होता जाता है तो धीरे धीरे स्टार्टिंग टेम्परेचर बढ़ता है. सो दिस इज कॉल्ड एज ग्रोथ टाइम. So that means fire grow हो रहा है धीरे धीरे. दिस इज़ द टाइम व्हेन
टेम्परेचर कीप्स ऑन इंक्रीजिंग एंड कम रहता है, धीरे धीरे ज़्यादा हो रहा है, ठीक है. सो दिस जो जोन इज देयर, दिस इज द स्टेडी कंबशन टाइम. दैट मीन्स मैक्सिमम टेम्परेचर रीच हो गया. अभी पूरा जितना टाइम है उतना देर तक वो सेम टेम्परेचर पे जलता रहेगा, ठीक है. उसके बाद रिमेनिंग थोड़े टाइम में धीरे 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 उसका एनर्जी कम होता आएगा. सो हियर दिस जो द टाइम है, so that means I'll try to remove all this dotted line so that you should not get confused. Okay, so ये जो टाइम है ना, दिस ग्रोथ टाइम है ना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. ये जितना आपको मिलेगा, ज़्यादा टाइम मिलता है, सो दैट मीन्स द आप फायर सेफ्टी ज़्यादा होता है. बिकॉज इमेजिन आप कोई तो एक घर में आग लग गया और इसका टाइम जो मैक्सिमम टेम्परेचर रीच होने के लिए, समझो देर आर टू बिल्डिंग्स, देर इज़ वन बिल्डिंग I'll do one thing. Okay, there are two buildings, there is building A and another building is B, ठीक है. समझो ये बिल्डिंग में जो स्टार्टिंग ग्रोथ टाइम है, तो मतलब आग लगने से स्टार्ट करके मैक्सिमम टेम्परेचर पहुंचने तक समझो it is having 10 minutes. Building A and building B is having 15 minutes. So दोनों सेम टेम्परेचर पे जाते हैं, बट इसको लगता है 10 मिनट्स और इसको लगता है 15 मिनट. सो दिस टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस टाइम में आपको भागना है या फायर एक्सटिंग्विशर जो भी रहता है वो आना चाहिए. तो मतलब इस टाइम पे इधर लोगों को भागने के लिए 10 मिनट है, इधर 15 मिनट है, और इधर फायर एक्सटिंग्विशर आके आग बुझाने के लिए 10 मिनट टाइम है और इधर 15 मिनट टाइम है. करेक्ट है ना. सो दैट मीन्स दिस इज़ मोर सेफर बिल्डिंग. फायर सेफ्टी इसका अच्छा है, क्योंकि ये स्टार्टिंग जो ग्रोथ पीरियड है उसको ज़्यादा टाइम दे रहा है, आपके पास भागने के लिए ज़्यादा टाइम है. करेक्ट है ना. और टेम्परेचर कम रहता है, धीरे धीरे इंक्रीज होता रहता है, तो आप जल्दी एस्केप हो सकते हो, ठीक है. सो दैट्स वाई फायर लोड या फायर सेफ्टी, ऑल दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. क्लियर है. सो हियर ऑब्वियसली इट विल रिमेन सेम, देन इट विल गोइंग टू रिड्यूस. तो फ्लैश और ये जो नेक्स्ट जो स्लाइड्स है ये सब वही लिखा हूँ. ए टू बी क्या है, बी टू सी क्या है, सी टू डी डी क्या होता है, मतलब कम हो रहा है. सो वही चीज़ें मैं इधर लिखा हूँ. सो नो, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दिस पॉइंट्स. सी ड्यूरिंग द ग्रोथ पीरियड दिस इज़ व्हाट आई वाज एक्सप्लेनिंग, ठीक है. सो ड्यूरिंग द ग्रोथ पीरियड टेम्परेचर इज लो बट ड्यूरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एज इट डिटरमाइंस द टाइम अवेलेबल फॉर escape. Emergency firefighting services, so that means all these things can be reduced. All these things अचीव करने के लिए ग्रोथ पीरियड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है. ओके, नेक्स्ट फायर सीवियरिटी defined as destructive potential of a fire, that is the potential impact of that fire will have upon the structural and construction components, hence it has a direct relation to the structural performance in terms of a component's fire resisting capabilities. So that means fire severity means कितना सीवियर है फायर, या कितना डैमेज कर सकता है या किया है, ठीक है. दैट इज़ नथिंग बट फायर सीवियरिटी. एंड किसके ऊपर, ऑब्वियसली एज अ सिविल इंजीनियर आई एम थिंकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर के ऊपर या कंस्ट्रक्शनल कंपोनेंट्स के ऊपर या स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स के ऊपर कितना डैमेज किया है. सो उसको बोलते हैं फायर सीवियरिटी, ठीक है. अगर बहुत ज़्यादा डैमेज किया है तो बहुत सीवियर फायर एक्सीडेंट था एज ए सिविल इंजीनियर, ठीक है. कम हुआ है तो ये, अगर बिल्डिंग ज़्यादा कुछ डैमेज नहीं हुआ है तो इट इज़ बेटर फायर रेजिस्टेंस बिल्डिंग, ठीक है. सो फायर रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए component ड्यूरिंग द फुल्ली डेवलप्ड स्टेज ऑफ ए फायर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन एवेलुएटिंग द एक्सटेंट ऑफ द फायर रेजिस्टेंस. दैट्स व्हाई आई टोल्ड फायर सीवियरिटी ज़्यादा है या कम है, दैट शोज बिल्डिंग का फायर रेजिस्टेंस, ठीक है. सो दैट इज द नेक्स्ट पॉइंट. फायर रेजिस्टेंट टेम्परेचर लेवल एंड द ड्यूरेशन ऑफ द हीटिंग आर डिपेंडेंट अपॉन द नंबर ऑफ फैक्टर्स रिलेटेड टू डिजाइन ऑफ बिल्डिंग एंड इट्स कंटेंट. If building withstand this exposure without becoming unstable or getting collapse without spreading the fire unrestrictedly, then they are considered to have adequate fire resistance. So that means after fire accident आपका जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स रहता है डैमेज नहीं होता है,
if it withstand the exposure without becoming unstable या damaging या getting collapsed, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, अगर withstand हुआ गया तो then you can call it as that particular building is having a better fire resistance. ठीक है. It is defined as ability of an element of a building construction to withstand the effects of fire for specific. That is what I was telling. So the same meaning. ठीक है. No. Okay, this is important. Once again, these things are important for examination. Evacuation time. Evacuation time means it is the time taken for the immediate and urgent movement of the people away from the threat or actual occurrence of a hazard. तो it is nothing but कि आपके कॉलेज में या आपके बिल्डिंग में या कोई भी बिल्डिंग में, हॉस्पिटल्स में, कहीं पे भी आग लग गया तो लोग अपने लोकेशन, अपने प्लेस से सेफेस्ट जगह पे भागने जाने के लिए जो टाइम लगता है या चाहिए, दैट टाइम इज़ कॉल्ड एज एवैक्यूएशन टाइम. ठीक है. तो टारगेटेड एवैक्यूएशन टाइम इज़ 2.5 मिनट्स. सो दैट्स वाई सो मेनी टाइम्स बाई कीपिंग दिस 2.5 मिनट्स यू नीड टू, सर ये कहाँ पे यूज़ होता है, ये कहाँ पे यूज़ होता है बोले तो 2.5 मिनट्स को आपको गाइडलाइंस दिया है, उसको पकड़ के आपको डिज़ाइन करना है. कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं सर? बाय सेइंग दैट वन यू नीड टू प्रोवाइड द स्टेयरकेसेस, इमरजेंसी स्टेयरकेस आता है, वो सब कौन से लोकेशन पे फिक्स करना है, तो दैट टाइम पे ये हेल्प होता है. ठीक है. या इस पॉइंट को देख के आपको उधर प्लान करना है ताकि वेन एवर देर इज़ एन फायर एक्सीडेंट द पीपल शुड लीव देयर पर्टिकुलर लोकेशन एंड दे शुड यूज़ द स्टेयरकेस एंड इमरजेंसी स्टेयरकेस, वो सब यूज़ करके बाहर सेफेस्ट प्लेस पे भाग के जाना है. For that one, the time is 2.5 minutes, and this whatever the 2.5 minutes is nothing but evacuation time, and which is very important because क्या बोलते, मेजर सीवियर फायर एक्सीडेंट होने से बचा सकता है या ह्यूमन लॉस होने से बचा सकता है. ठीक है. So that is about the evacuation time, and I think this continuation it is not required because most of the whatever the syllabus, according to your syllabus, whatever the information it is there, whether it is a fire resistance, fire load, evacuation time, fire severity, all these informations are covered. Fire hazard, all these informations are asked in the examination. So hope you understood this particular topic. So from now onwards what we are going to do is every day I'm going to upload one video for this lecture. So you better use these videos for your for examination point of view. Because of this lockdown, we know we are not conducting the college classes. ठीक है, कॉलेज में नहीं आ पा रहे, तो we'll try to utilize this video lectures and study well for your exams and do better performance करो. ठीक है. चलो, thank you, have a great day.